Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum student. The content that we will going to discuss today, it is from the course titled Curriculum Design and Instruction. The course code is EDUC 2118. So we are at unit number 2. The name of the unit number 2 is Curriculum Aim, Goals and Objectives, and we already have done it, the differences between all of these three stuff. Afterward, we started out with the Bloom's taxonomy, and we already have done with Bloom's two domains, that is cognitive and affective domain. So for today's discussion, our key focus is on the last domain of Bloom's, and that is psychomotor domain. Here are learning outcomes. So the learning objectives for today's discussion, number 1, we will going to give a recap to the cognitive and affective domain. Then we will going to discuss different levels of psychomotor domain in different subjects. So where we will going to see how psychomotor domain student learning outcome will look different in language art, in sciences, and in teacher education. Last but not the least, I will explain you the assessment methods in psychomotor domain that most of the time teachers take it to measure the skill level in students. At the bottom of this page, you can see the websites. These are the websites from where I have taken the material that is presented in this presentation. So we all know who is Bloom's and what Bloom's did. So Bloom's actually categorized student learning outcome into 3 domains. What he did, first of all, he identified the student learning outcome that actually belong to the knowledge and intellectual skills, where students have to think, have to reason, have to make decision, and they have to work with their mind and intellectual skills to answer those questions or to solve those problems. So what he did, he put all of those student learning outcomes, those related to the intellectual skills, into the cognitive domain. And cognition itself is thinking. At the second category and the domain, what he did, he put all of the student learning outcome that's related to the motivations, attitudes, values, and feelings into the affective domain. And the last domain, that's psychomotor domain, what he did, he put all of the student learning outcome that include physical movements, coordination, and use of motor skill areas into the psychomotor domain. And this is actually the key focus of our today's discussion. In the cognitive domain, we already discussed that students actually use their intellectual skills and thinking and reasoning and decision-making skills to answer different level of questions or to solve different level of problems. For example, if they encounter a question or a problem that is related to the knowledge level, in which they have to just recall what they have learned previously. They don't need to put lots of effort, and that is known as the knowledge level question. To answer any kind of question, they actually need to think. They actually need to use their intellectual abilities. So in the cognitive domain, we have 6 levels, and all of these 6 levels actually are proceeding from the lowest level to the highest level. This is one of the most common thing that you can see in all of the 3 domains of Bloom's. So all the 3 domains of Bloom's, first of all, have levels. Number 2, all of the 3 domains of Bloom have action verbs. Number 3, all of the 3 domains have hierarchy. You can see in the cognitive domain that the lowest level of at the hierarchy is the knowledge, and the highest order thinking skill at the highest level of hierarchy is evaluation. Here we are with the Bloom's affective domain. What we have learned in the Bloom affective domain, that in the curriculum, it is the most underrated student learning outcome related stuff. Most of our curriculum, most of our textbook, most of our schooling actually largely focusing on the cognitive domain and little focus actually put over there on the affective domain. But it is equally important. And why it is less over there? Because it is more ambiguous. Teachers can actually measure and actually develop cognitive skill in a student in a specific teaching learning time. For example, 50 minutes, for example, in 1 hour.
But for developing affective domain, time is a constraint. Take an example. If you want to develop affective domain related student learning outcome, that they are going to be honest in their academic procedure, honesty cannot be developed just in 30 minutes or 50 minutes. It takes time, and we have to take the student through different processes. So that's the reason effective domain is actually difficult to address in the student learning outcome, especially when teachers take it. But what else you can see over here? It is the same stuff. It has levels. It has 5 levels, and there is a hierarchy. The lowest level is the receiving phenomena. The highest level is the internalizes value. And it also has a different action verb for each level. Psychomotor domain, and that is a topic for today's discussion. Before moving into what is psychomotor domain, it is important to understand that all of these 3 domains are actually not separate entity. They don't work independently. Actually, they work together, and they are interrelated, and they are interdependent. So what does it mean by if we are teaching cognitive skills in the student, or if we have student learning outcomes that are related to the cognitive domain, they never work alone. Every subject have cognitive part and psychomotor part and affective part. Let's take an example of English. So in the English, most of the content is actually related to the cognitive part. But when we come to the skills that are writing skills, reading skills, creative writing skills, analytical skills in English language or in Urdu language, they actually are skills, and they related to the psychomotor domain. So every subject have a cognitive part, and every subject have some related cognitive skills as well. And definitely every subject need affective domain, where students need to develop some kind of attitudes and values in them so that they can pursue this subject or take on the subject with success and with motivation. So let's begin with it. Psychomotor behavior contain elements of cognition, affective behavior within them. And what they include? They include motor skill. So what comes into your mind first when you look at the word motor? Let me talk about my mind. Once I look at the word motor, मेरे जहन में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो ये आती है कि एक मशीन है, मैकेनिकल मशीन है, उसके मल्टीपल पार्ट्स हैं, और जब वो मशीन चलती है तो तमाम पार्ट्स एक कोऑर्डिनेशन में सिस्टमेटिकली एक हारमोनी के साथ चलते हैं. लेट्स गिव अ एग्जांपल. हमारे सामने एक घड़ी की एग्जांपल हो सकती है. जब हम घड़ी को पीछे से खोल के देखते हैं और उसमें सेल लगाते हैं तो आप ये नोट करेंगे कि घड़ी में मल्टीपल पार्ट्स हैं और वो तमाम पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. वो एक सिस्टम में एक कोऑर्डिनेशन में चल रहे हैं, जिसकी वजह से घड़ी चलना शुरू हो जाती है और वो एक एग्जैक्ट टाइम देती है. So this is an example of a motor skill, but we need to take it now from the mechanics to the humans. In the classroom teaching learning process, what teacher can do, they actually include physical movement, coordination, and use of motor skill areas that we actually observe in a student in different subjects and in different psychomotor skill related to different areas or subject or courses. The development of these skills requires practice. Definitely जब भी हम कोई स्किल अपने अंदर डेवलप करते हैं तो वो कभी भी 30 मिनट 40 मिनट में डेवलप नहीं होती. उसको डेवलप करने के लिए, उसको पॉलिश करने के लिए हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है. यहाँ पे मैं आपको 2 एग्जांपल्स दूंगी. सबसे पहली एग्जांपल है कि अगर हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो हम साइकिल चलाना 15, 20 या 50 मिनट में नहीं सीख सकते. हो सकता है कि हम उसकी बेसिक सीख जाएं, लेकिन साइकिल को प्रॉपरली चलाने के लिए और एक बाज़ार में जो ट्रैफिक से भरा हो वहाँ चलाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम प्रैक्टिस करें, हम रोज़ाना की बेसिस पे प्रैक्टिस करें और आहिस्ते आहिस्ते वो स्किल डेवलप होती है, एक माइनर स्किल से लेके एक मास्टरी स्किल्स तक. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. अगर हम खत्ताती सीखना चाहते हैं और खत्ताती सीखने के लिए ये ज़रूरी होता है कि हमें उसकी मशक करनी पड़े. ये मुमकिन नहीं है कि आप खत्ताती पहली ही क्लास में ज़बरदस्त किस्म की सीख जाएं. उसमें अपनी मास्टरली डेवलप करने के लिए, उसके अंदर अपनी ज़बरदस्त किस्म की सलाहियतों को उजागर करने के लिए आपको उसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी पड़ती है. तो कहीं जाके आप बहुत प्रैक्टिस के बाद
एक बेसिक खत्ताती से उस खत्ताती पे आते हैं जहाँ आपका अपना एक्सप्रेशन शुरू होता हो. सो दैट्स हाउ ये जितनी भी स्किल्स हैं, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि ये आपसे प्रैक्टिस रिक्वायर्ड करती हैं. इट measured in terms of speed, precision, distance, procedures और techniques in execution. So teachers इसको क्लासरूम में बच्चों में कैसे मैयर करते हैं, कैसे टेस्ट करते हैं कि बच्चों में किस लेवल की स्किल्स मौजूद हैं, या हमने जिस तरीके से पढ़ाया है, जो स्किल्स हम उनमें डेवलप करना चाहते थे, अब बच्चे स्किल्स के किस लेवल पे हैं. तो उनके जो मैयरिंग टूल होते हैं उनके अंदर ये इंडिकेटर होते हैं. पहला क्या होता है, स्पीड. कि अगर हम किसी स्किल को मैयर कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि वो स्टूडेंट उसको किस स्पीड से परफॉर्म करता है. क्या वो बीच में बार बार रुकता है, क्या उसकी स्पीड टूटती है. जो स्टूडेंट जितने कम टाइम में वो टास्क परफॉर्म करके दिखा देगा, इसका मतलब है कि उसकी महारत ज़्यादा है. प्रोसिशन का मतलब है एक्यूरेसी, कि आप जो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं वो कितनी एक्यूरेसी के साथ कर रहे हैं. डिस्टेंस का मतलब है कि कितने इंटरवल्स और गैप्स आ रहे हैं आप उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए. अगर कोई डिस्टेंसेस, कोई गैप्स नहीं है और आप स्मूथली हारमोनी और रिदम के साथ उसको परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप इस स्किल के ऊपर सबकत हासिल है. देन क्या उस स्किल को परफॉर्म करने के लिए जो टेक्निक्स और प्रोसीजर रिक्वायर हैं, क्या उनको आप सिस्टमेटिकली, लॉजिकली और विद स्पीड, विद एक्यूरेसी, विदाउट एनी गैप प्रॉपरली परफॉर्म कर रहे हैं. अगर आप कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप में वो स्किल हायर लेवल पे मौजूद है. सो टीचर्स इस किस्म की चेकलिस्ट बनाते हैं, रीडिंग स्किल्स बनाते हैं जिसके ऊपर ये तमाम चीज़ें लिखी होती हैं, और उसके हिसाब से वो जज करते हैं कि कौन सा स्टूडेंट स्किल में हायर लेवल पे है, कौन सा मिडिल पे है, कौन सा लोअर मिडिल पे है, और कौन सा बिल्कुल इनिशियल लेवल पे है. In the psychomotor domain. Like cognitive domain and affective domain, psychomotor domain also have categories, and it also has a hierarchy. It means that there is a lowest domain and lowest level of a skill, and there is a highest level of skill in these categories. So whatever the material you can see on this page, I have taken it from the website that is given below the heading. So let's begin with the first level of psychomotor domain, that is the lowest level of skill, and it is known as imitation. What is imitation? It is replicating an act that has been demonstrated or modeled by the teacher or other classmates. Let's take an example. इसका मतलब ये हुआ कि ये स्किल सीखने का वो लेवल है जहाँ आपको स्किल बिल्कुल भी नहीं आती और आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता कि वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको लेके मैंने इस काम को करना है. लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ माइन. जब मैंने गूगल क्लासरूम बनानी थी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि गूगल क्लासरूम कैसे बनाई जाती है. सो मैंने क्या किया कि मैंने यूट्यूब पे जाके गूगल क्लासरूम बनाने की इंस्ट्रक्शंस को देखी. वो जो चैनल जहाँ से मैं इंस्ट्रक्शन देख रही थी, वहाँ इंस्ट्रक्टर उसकी इंस्ट्रक्शन दे रहा था, और मैं हर इंस्ट्रक्शन के बाद उस यूट्यूब वीडियो को पोस्ट करती थी और वही एक्शन अपने जीमेल में जाके परफॉर्म करती थी. So what I was doing, I was replicating, I was actually copying, I was actually imitating. So जब मैंने अपनी पहली गूगल क्लासरूम बनाई, I was imitating and copying each and every step that instructor was doing in that YouTube video. Let's take an example from the computer classes or information technology classes. जिन स्किल्स के बारे में आपको बिल्कुल नहीं पता होता कि उसको कंप्यूटर में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, या इन सॉफ्टवेयर को कैसे डेवलप किया जाता है, या इस फॉर एग्जांपल लेट्स टेक वन एग्जांपल कि हम वर्ड में ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनाते हैं. अगर आप ये बिल्कुल नहीं जानते और आपका टीचर आपको बताता है कि इसको ऐसे बनाते हैं, तो आप क्या करते हो? पहले लेवल पे टीचर के एक एक स्टेप को कॉपी करते हो. टीचर जो जो चीज़ खोलता जाता है आप भी वही चीज़ खोलते जाते हो. टीचर जो जो स्टेप्स लेता जाता है वही स्टेप्स लेते चले जाते हो. एंड व्हाट यू आर डूइंग, यू आर एक्चुअली कॉपिंग योर टीचर. सो दैट इज़ द फर्स्ट लेवल, एंड दैट इज़ इमिटेशन, एंड दैट इज़ द वेरी बेसिक लेवल ऑफ स्किल, where you actually don't know the skill, and if you want to perform something you need to observe and replicate it, and you need help. So let's take an example. Example is from the language art courses. Student
कॉपीज डाउन नोट्स और मॉडल रीडिंग रिस्पॉन्सेज। सो हमारे पास लैंग्वेज आर्ट के एग्जाम्पल है, आप चाहे इंग्लिश ले लीजिए, उर्दू ले लीजिए या आप अरबिक ले लीजिए। किसी भी लैंग्वेज में हमें बहुत से वर्ड्स टीचर को वाइट बोर्ड पे और ब्लैक बोर्ड पे लिखने पड़ते हैं और फिर क्या करते हैं स्टूडेंट उसको कॉपी करते हैं। या जब हम डिफरेंट लैंग्वेजेस बोल रहे होते हैं, बच्चों को प्रोनाउंसिएशन सिखा रहे होते हैं, एक्सेंट उनका डेवलप कर रहे होते हैं कि ये वर्ड्स मिला के किस तरीके से बोले जाते हैं, फोनोलॉजी के बारे में बात कर रहे होते हैं, या अरबी में हम सिखा रहे होते हैं कि किस तरह पढ़ा जाता है, किस तरह बोला जाता है, जैसे कि तोए और ते का फ़र्क कैसे आता है, और से का और स्वाद का फ़र्क कैसे आता है, या सीन का फ़र्क कैसे आता है, अलिफ मद्दा या अलिफ का फ़र्क कैसे आता है। तो टीचर्स वो बोलता है, वो बोल के सिखाता है और बच्चे क्या करते हैं उसे कॉपी कर रहे होते हैं, उसी तरह से बोलने की कोशिश कर रहे होते हैं जैसे कि उस्ताद बोल रहा होता है। Then the second level is manipulation. That level is better than the mediation level, in which student recreating an activity from instruction or memory. So at this level पे क्या होता है कि स्टूडेंट टीचर को फिर कॉपी नहीं करता। वो जब 2-3 दफ़ा इस एक्टिविटी को टीचर के साथ कर लेता है तो उसके बाद वो उसे खुद से करने लगता है विदाउट द हेल्प ऑफ टीचर। तो वो क्या करता है कि वो सिर्फ याद करता है कि टीचर ने क्या स्टेप फॉलो अप किए थे। सो लेट्स टेक माई एग्जाम्पल। जब मैंने गूगल क्लासरूम बनाई उस इंस्ट्रक्टर के एक एक स्टेप को कॉपी करके, तो उसके बाद मुझे दूसरी और तीसरी दफ़ा दोबारा से गूगल क्लासरूम बनानी पड़ी। तब तक मुझे याद हो गया कि क्या स्टेप थे, तो फिर मैंने वो यूट्यूब वीडियो नहीं देखी, मैंने उन स्टेप को रिकॉल किया क्योंकि वो मुझे याद हो गए थे, और फिर मैंने रिकॉल करके उसको 1 बाय 1 परफॉर्म करना शुरू किया और अपनी गूगल क्लासरूम बना ली। यहाँ पे हमारे पास क्या एग्जाम्पल है? Student implements teaching points such as highlighting the most important part in his or her independent work. So languages में चाहे इंग्लिश, उर्दू हो या अरबिक हो, टीचर्स स्टूडेंट को सिखाते हैं, क्या क्या सिखाते हैं कि अपने काम का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसको कैसे हाईलाइट करना है, और उस हाईलाइट करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके हो सकते हैं, मुख्तलिफ मैथडोलॉजीज़ हो सकती हैं। तो जब स्टूडेंट ये सीख लेते हैं तो इवन टीचर उनको स्टेप बाय स्टेप वो जो स्टेप बाय स्टेप वो पॉइंट्स ना भी कराए, स्टूडेंट वो खुद कर लेते हैं। दे नो how to highlight the most important part of his or her independent work. The other level is precision, it is accuracy, and definitely it is a better level than the manipulation and imitation. इसमें क्या होता है? इसमें स्टूडेंट एग्जीक्यूट करते हैं अपनी स्किल बगैर किसी भी किस्म की मदद के, और इसमें उनके अंदर स्पीड डेवलप हो जाती है और वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस से विदाउट एनी हेल्प दे कैन परफॉर्म वट एवर द लर्नड स्किल। हम लैंग्वेज आर्ट में देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ डिक्शनरी। वेरी सिंपल। जब हम छोटे बच्चों को डिक्शनरी यूज़ करना सिखाते हैं तो सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं, जैसे जैसे टीचर कहता जाता है करता जाता है, बच्चे उसको एग्जैक्ट फॉलो करते जाते हैं, इमिटेशन लेवल। जब बच्चे 2-3 दफ़ा डिक्शनरी यूज़ कर लेते हैं तो फिर उनको टीचर की हेल्प की ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन वो अपने माइंड में याद करते हैं कि मिस ने अब ये किया था, उसके बाद ये किया था, उसके बाद ये किया था। लेकिन एट द लेवल ऑफ प्रोसेशन क्या हो जाता है, दे डोंट नीड टू इवन रिकॉल, दे बिकम फ्लुएंट, दे बिकम स्पीडी, दे बिकम एक्यूरेट, and they just find out the word immediately. So that is a better level of skill. The other level of skill that is better than precision is articulation, in which the integration of older skills to perform new skills. Take an example. A student develops their use of intonation to perform a play in front of the class. So at the level of the articulation, what the student do? वो अपनी पुरानी सीखी हुई स्किल्स को फाउंडेशन बनाते हैं और फाउंडेशन बना के उस पर नई स्किल्स लर्न करना शुरू कर देते हैं। सो हमारे पास लैंग्वेज आर्ट में क्या एग्जांपल है कि अगर आप कोई प्ले करा रहे हैं तो बच्चों को पता होता है कि उन्होंने किस सेंटेंस पे स्ट्रेस देना है, किस सेंटेंस को कैसे बोलना है, और वो अपनी मल्टीपल स्किल्स को वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, अपनी आवाज़ के उतार चढ़ाव को इस्तेमाल करते हैं, कहीं वो भारी बनाते हैं, कहीं वो जज्बाती बनाते हैं, और फिर नई स्किल्स को पुरानी स्किल की फाउंडेशन पे सीखते हैं और क्लास के सामने डायलॉग्स को आराम से परफॉर्म करते हैं। हाईएस्ट लेवल क्या है साइकोमोटर डोमेन का? दैट इज नेचुरलाइजेशन, एंड इन द नेचुरलाइजेशन these skills become their internal part, and it is a level of mastering a skill.
Students construct well-written reading responses by subconsciously using previous taught reading strategies. So naturalization is the highest level of a skill where actually student action, response or behavior become automatic and they don't need to think a lot about it. So ये वो लेवल है जिसके अंदर स्किल जो है अपने हाईएस्ट लेवल पे इंटरनलाइज हो जाती है. जस्ट रिकॉल वो बंदा जो कि नई नई गाड़ी सीख रहा है और वो बंदा जो एक्सपर्ट ड्राइवर जो होता है वो बहुत आसानी से गाड़ी चला रहा होता है, उसे कोई टेंशन नहीं होती. वो अपने दिमाग में मल्टीपल बातें भी सोच रहा होता है, वो गाड़ी में भी इधर उधर देख रहा होता है, उसका एक हाथ स्टीयरिंग पे होता है. उसको ये सोचना नहीं पड़ता कि मेरा गियर कहाँ पे है, उसको ये देखना नहीं पड़ता कि मैंने सेकंड गियर लगाने के लिए नीचे देखना है. एवरीथिंग बिकम ऑटोमेटिक, everything becomes smooth and everything become harmony and rhythmic. So it's become actually internalized. अब उसको नेचुरलाइजेशन के लेवल पे स्किल को करने के लिए बहुत ज़्यादा सोचो विचार की ज़रूरत नहीं होती और रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं होती. दे आर डूइंग इट विद मास्टरी. So here is another example. These are the learning objectives of psychomotor domain that are related to science. So that's the first level of remediation. और what we need to know कि जो learning objectives बनाए जाएंगे उसमें हमारी expectation स्टूडेंट से क्या होगी. स्टूडेंट हमें कॉपी करेंगे क्योंकि हम टीचर्स हैं, हम उन्हें परफॉर्म करके दिखाएंगे और वो मिमिक करेंगे हमारा बिहेवियर देख के. जैसे जैसे हम करेंगे स्टूडेंट वैसे वैसे फॉलो अप करेंगे. और स्टूडेंट जो ऑटोमेटिकली चीज़ें कर रहे हैं, जो अटक अटक के नहीं कर रहे या जो मेरी इंस्ट्रक्शन का नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का इंतज़ार नहीं कर रहे, इसका मतलब है कि वो स्टूडेंट इमीडिएशन के लेवल पे नहीं है. नंबर 2 एंड 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टाफ कि स्टूडेंट इस लेवल पे गलतियाँ करेंगे. जब भी हम स्किल्स पहली दफ़ा सीख रहे होते हैं तो हमसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं और ऐसा नहीं होता कि हम शुरू के लेवल में बगैर गलतियाँ किए सीख लें. सो एरर्स आर एक्सपेक्टेड बिकॉज दे आर ट्राइंग ऑन दोज स्किल्स. हमारे सामने कुछ एक्शन वर्ब्स हैं जो कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम बनाने में या ऑब्जेक्टिव बनाने में काम आ सकते हैं. एंड दैट इज़ लाइक रिपीटिंग, सेट, फॉलोइंग, वेट, होल्डिंग. एंड लेट्स गिव अ एग्जाम्पल over here of a student learning outcome that is related to the physics. The example is student can weight objects appropriately. So that is a skill and it is a psychomotor skill कि student मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट का वज़न लेना किस तरह सीखते हैं. वो पहले टीचर को इमिटेट करते हैं. टीचर जो जो प्रोसेस फॉलो कर रहा होता है उस प्रोसेस को देखते हुए उसे कॉपी करके बिल्कुल उसी तरीके से मल्टीपल चीज़ों का वेट लेते हैं और उस वेट को लिखना सीखते हैं. स्टूडेंट कैन पोजिशन द स्केल टू ज़ीरो बिफोर मेजरमेंट विद एन amateur. The second level is the manipulation, and again we have an example of sciences. What we are expecting from the student at this level, the first thing कि बच्चों को अगर हम विजुअल एड ना भी दें, करके ना भी दिखाएं, तो भी स्टूडेंट जो हम उन्हें काम दे रहे हैं, जो स्किल परफॉर्म करने को दे रहे हैं, वो उसे कर लेंगे. Then students are given clues in the form of written verbal instruction and are expected to perform actions. So स्टूडेंट को अगर हम इंस्ट्रक्शन लिख के भी दे दें तो स्टूडेंट उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो अप करके अपने एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये बेहतर लेवल है स्किल परफॉर्मेंस का और स्टूडेंट को अब एग्जाम्पल देखने की कोई भी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है. सो जब टीचर लर्निंग ऑब्जेक्टिव बनाते हैं साइकोमोटर डोमेन का, मैनिपुलेशन लेवल का, तो वो किस किस्म के एक्शन वर्ब यूज़ कर सकते हैं लाइक फिल, डेमोन्स्ट्रेट, पुट, डिज़ाइनिंग, मेकिंग, फिक्स. और हमारे पास एक स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव बना हुआ है, हम देखते हैं कि वो क्या है. स्टूडेंट कैन टर्न ऑन अ कंप्यूटर बाय रीडिंग द मैनुअल एंड वर्बल एक्सप्लेनेशन. सो स्टूडेंट को अब टीचर को करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है. अब टीचर सिर्फ वर्बली इंस्ट्रक्शन दे तो स्टूडेंट कंप्यूटर का वो सॉफ्टवेयर खोल लेते हैं या उसको इस्तेमाल करना सीख लेते हैं, या अगर उनके पास मैनुअल मौजूद हो तो वो उसे पढ़ के भी उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना सीख सकते हैं. सो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम आ गया हमारे पास थर्ड लेवल का, दैट इज़ प्रोसीजन, मूवमेंट, एक्यूरेसी. सो इसके अंदर हमारे क्या एक्सपेक्टेशन है स्टूडेंट से हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि स्टूडेंट to perform a behavior without the use of visual examples and instruction in writing and do it with a smooth, precise, balanced and accurate way.
So do you remember the word precise, balanced and accurate? इट्स मीन कि वो स्मूथली एक काम को कम से कम गलतियों के बगैर आराम से वो इस लेवल पे कर सकते हैं। वो इतनी प्रैक्टिस कर चुके होते हैं कि अब जब आप उनसे वो स्किल परफॉर्म करने के लिए कहते हैं तो वो फटाफट एक स्पीड में एक एक्यूरेट तरीके से कर देते हैं और उस स्किल को करने में उनमें कोई मिस्टेक नहीं होती। एडजेक्टिव्स क्या हो सकते हैं? अप्रोप्रिएटली, विदाउट एरर, स्मूथली, वेल। और हमारे पास स्टूडेंट लर्निंग आउटकम क्या है? Let's take an example. Students are able to type data into a database without making mistakes. So जब database में student data enter कर करके practice कर करके उसके आदी हो जाते हैं और ये skill develop हो जाती है तो फिर उनकी data entry में with the passage of time कोई गलती नहीं रहती। Then we have articulation और उसके अंदर हमारी expectation क्या है students की कि they will going to demonstrate a series of movement with accurate, correct order and the right speed. Right speed वो काम करने के लिए जो speed required है वो उसके through करेंगे। Order जो उसका correct order है descending और ascending वो उस order में करेंगे और बिल्कुल accurately perfect करेंगे और उसमें कोई mistake नहीं होगी। So हम example ले लेते हैं फौरन यहाँ पे। Student can sketch bimetal experimental model accurately. Then it is the last example of sciences, and this example is of the highest level of skill, that is naturalization, जिसके अंदर हमारे learning objective में क्या expectation है student से? To perform certain movement spontaneously or automatically. That is a key point of the highest level of skill. कि उस level पे skills क्या हो जाती हैं? Spontaneous हो जाती हैं, automatic हो जाती हैं। आपको उन स्किल्स को परफॉर्म करने में आपकी स्पीड बढ़ जाती है और आपसे कोई गलती नहीं होती, आप एक्यूरेटली उस चीज़ को परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो स्टूडेंट परफॉर्म द मूवमेंट विदाउट थिंकिंग अगेन। वो बीच में रोक के ये नहीं सोचते कि कहीं मैंने कोई स्टेप मिस तो नहीं कर दिया, कहीं मैंने कोई स्टेप पहले तो नहीं कर दिया, या बाद वाला स्टेप जो है वो मुझसे भूल गया। सो दे आर सो परफेक्ट कि उनको मेमोराइज नहीं करना पड़ता, रिकॉल नहीं करना पड़ता, याद नहीं करने पड़ते। दे आर इन अ नेचुरल ऑटोमेटिक स्पॉन्टेनियस फ्लो। थिंक अबाउट अ म्यूजिशियन जो एक्सपर्ट म्यूजिशियन है, वो बीच में कोई पॉज नहीं लेता, वो एक फ्लो में, एक रिदम में, एक एक्सपर्टी के लेवल पे चल रहा होता है। दैट इज स्पॉन्टेनियस एंड इट इज़ एक्चुअली लाइक ऑटोमेटिकली। वो कोई कॉन्शियसली थिंकिंग करके उस इंस्ट्रूमेंट को नहीं बजा रहा होता। सो हमारे पास एग्जाम्पल क्या आती हैं? लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ साइकोमोटर डोमेन। In the sciences, student can operate the program database smoothly. So अब जब आप उनको प्रोग्राम डेटाबेस दोगे तो उसको आराम से स्मूथली, एक्यूरेसी के साथ, स्पॉन्टेनिटी के साथ, बगैर किसी मिस्टेक के, बगैर बहुत ज़्यादा सोचे समझे और फिक्र किए और बार बार रिकॉल किए, वो बिल्कुल एक मास्टरी, एक आर्टिस्टिक लेवल पे उसको परफॉर्म कर सकेंगे। This is the last example of this presentation and it is from the teacher education. Why I have taken it from the teacher education? Because we are studying and teaching in a teacher education institution, and the purpose of all of the teaching learning process is actually to develop professionals in the field of education and preparing teachers for educational institutions. So let's take an example. At the very first level of imitation, what actually our students do? जब स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट ईयर में आते हैं तो डेफिनेटली उन्होंने स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ा होता है, उन्हें पता होता है कि हमारे स्कूल्स में टीचर्स होते हैं, असेसमेंट्स होती हैं, मार्किंग होती है और वो तमाम प्रोसेस से गुजरे होते हैं। पर एक्चुअली उन्हें ये नहीं पता होता कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो इतना कॉम्प्लेक्स है, करिकुलम इतना कॉम्प्लेक्स है और उसकी मल्टीपल थियरीज़ हैं, उसकी मल्टीपल डेफिनेशन है, डिफरेंट किस्म की टीचिंग मेथड्स हैं और उनकी डिफरेंट लिमिटेशंस और स्ट्रेंथ हैं। जब वो तमाम चीज़ें पढ़ रहे होते हैं तो वो एक्चुअली शुरू में हर चीज़ में टीचर के प्रोसीजर को कॉपी कर रहे होते हैं। आई एम गोइंग टू गिव यू एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो टीचिंग ओवर हियर। माइक्रो टीचिंग एक बहुत बड़ा फिनोमेना है, लेकिन माइक्रो टीचिंग में हम करते क्या हैं कि टीचिंग के डिफरेंट पार्ट्स हम बच्चों को तोड़ तोड़ के उसमें हम उसको प्रैक्टिस कराते हैं ताकि बच्चे टीचिंग के मल्टीपल पार्ट्स में अपनी एक्सपर्टीज़ डेवलप कर सकें, उन मल्टीपल स्किल्स में
मास्टरी लेवल की स्किल डेवलप कर सकें। टेक अ एग्जाम्पल, माइक्रो टीचिंग में सम टाइम हम ये सिखाते हैं कि आपके पास वाइट बोर्ड अवेलेबल होता है क्लासरूम में, तो आपने उस वाइट बोर्ड को किस तरीके से स्किलफुली इस्तेमाल करना है। वाइट बोर्ड को इस्तेमाल करने के लिए आपने मेन हेडिंग सेंटर में लिखनी है, सब हेडिंग साइड्स पे लिखनी है, लंबे लंबे जुमले नहीं लिखने हैं, सिंबल्स यूज़ करने हैं, बुलेट्स यूज़ करने हैं और एक खूबसूरत लेआउट बनाना है जो अट्रैक्टिव लगे। आपने जब जो भी पॉइंट लिखना है उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना है। और आप उसमें क्या कर सकते हैं, और आपने बहुत ढेर सारा टेक्स्ट वाइट बोर्ड पे नहीं लिख देना, उसको ऑब्जेक्टिवली ऑर्गेनाइज करना है। सो हम टीचर्स क्या करते हैं, हम सबसे पहले बच्चों को एक टॉपिक पे वाइट बोर्ड पे लेआउट बना के दिखाते हैं और उसको पढ़ाने की कोशिश करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से जो वाइट बोर्ड लेआउट के मुताबिक होता है। सो स्टूडेंट टीचर क्या करते हैं, दे एक्चुअली इमिटेट द टीचर एजुकेटर। जो वाइट बोर्ड मैं बनाती हूँ स्टूडेंट उसको एग्जैक्ट कॉपी कर लेते हैं और घर जाके अपने कोई 2 और टॉपिक्स लेके उसको प्रैक्टिस करते हैं कि अगर हमें ये टॉपिक पढ़ाना पड़े तो हमारा वाइट बोर्ड लेआउट कैसा होगा। सो दैट इज़ द फर्स्ट लेवल, कॉपिंग एंड इमिटेटिंग द टीचर एजुकेटर, demonstrate the skill in teaching and student teacher imitate them in their teaching. सेकंड लेवल क्या होता है, सेकंड लेवल में जब बच्चे इसको 2-3 दफ़ा घर में प्रैक्टिस कर लेते हैं और उनका कोई क्लास फेलो आके उन्हें कहता है कि भाई मैंने तो छुट्टी कर ली थी उस क्लास में और मुझे नहीं पता चला कि मिस ने क्या बताया, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उस दिन टीचर ने क्या सिखाया था। तो वो स्टूडेंट उसको वो तमाम वाइट बोर्ड लेआउट बनाना सिखाते हैं बगैर टीचर की मदद के। दैट्स अ बेटर लेवल ऑफ स्किल। थर्ड लेवल में क्या होता है स्किल के, हमारे टीचर्स स्टूडेंट टीचर्स में थर्ड लेवल पे स्टूडेंट टीचर्स काबिल हो जाते हैं कि वो टीचिंग प्रैक्टिस के लिए हम उनको रियल स्कूल्स में भेजते हैं जहाँ वो रियल क्लासरूम में छोटे बच्चों के सामने खड़े होकर रियल टीचिंग कर रहे होते हैं। सो दैट इज़ अ लेवल वेयर दे आर बेटर, दे हैव बेटर स्किल्स ऑफ टीचिंग। At the level of articulation, integrating the skills in teaching, the student teacher prepare lesson plan on her own by integrating skills practicing and practice teaching. So at the other level, student क्या करते हैं, multiple skills को interrelate करते हैं और अपनी teaching में इस्तेमाल करते हैं. The last level is mastery in teaching. So जब students mastery in teaching में आ जाते हैं तो what they do? Finally the student teacher get mastery over the skill of teaching और उसमें उनके अंदर एक ऑटोमेसी आ जाती है, स्पॉन्टेनिटी आ जाती है, एक नेचुरलनेस नज़र आनी शुरू हो जाती है। अब उन्हें बार बार रुकना नहीं पड़ता, अब उन्हें बार बार अपने नोट्स चेक नहीं करने पड़ते, अब उन्हें बार बार अपना लेसन प्लान नहीं देखना पड़ता। नाउ दे आर इन अ नेचुरल रिदम और नेचुरल फ्लो और उसके अंदर आपको पता चलता है कि वो बग़ैर किसी ब्रेक के और रुकावट के अपने टॉपिक पे एक्सपर्टीज़ रखते हैं और मल्टीपल टीचिंग मेथड्स को स्मूथली परफॉर्म करने के काबिल हो जाते हैं। That is the last point of our discussion, and that is psychomotor test. How teachers actually measure psychomotor skills in a student. So there are so many ways, but we will going to discuss just 2 ways. The one is checklist. What is checklist? It contains a set of items that reflect the range of action that must be displayed by the student. So I'm sure कि आपको बहुत सी checklist याद होंगी, आपने देखी होंगी. Just take an example कि जब हम कुकिंग कर रहे होते हैं और हम डिश बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं कि इस डिश में ये तमाम चीज़ें डलेंगी और जो जो चीज़ डलती जाती है हम उसके आगे टिक लगाते जाते हैं और एकदम हमें पता चलता है कि हमारे पास तो ये चीज़ ही नहीं है, तो हम उस जगह पे क्या करते हैं, क्रॉस लगा देते हैं कि हमने ये चीज़ नहीं डाली। सो इन द सेम वे हम टीचर्स स्टूडेंट की स्किल्स को मेजर करने के लिए भी चेकलिस्ट बना सकते हैं। हमें करना क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू गिव अ लुक फॉर इंडिकेटर्स ऑफ मास्टरी ऑफ द स्किल्स टेस्टेड। हमें इंडिकेटर्स सबसे पहले देखने पड़ते हैं जो उस स्किल से रिलेटेड होते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये देखना चाहती हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के मल्टीपल कैंपसेस की क्लासरूम कंडीशन कैसी है और क्लासरूम फैसिलिटीज़ क्या हैं, तो एक यूनिवर्सिटी की जो क्लासरूम फैसिलिटीज़ हो सकती हैं मैं उसके मुताबिक उसके इंडिकेटर्स को लेके एक चेकलिस्ट बना सकती हूँ कि क्लासरूम का आइडियल साइज़ इतना है, वहाँ इतनी लाइट्स होंगी, वहाँ ऐसी टेबल्स होंगी,
वहाँ लैपटॉप्स होंगे, वहाँ एसी होगा, वहाँ पे मल्टीमीडिया होगा, वहाँ पे वाइट बोर्ड होगा, और जो कुछ भी एक आइडियल क्लासरूम के इंडिकेटर हो सकते हैं वो सारे लूँगी। फिर मैं आपके कैंपस में आके आपकी क्लासरूम ऑब्जर्व करूँगी और उस क्लासरूम में जो जो चीज़ें होंगी मैं उस पर टिक लगा लूँगी। सो इट इज़ अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल ऑफ अ चेकलिस्ट। पर टीचर क्या कर रहे हैं, वो क्लासरूम ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, वो आपका एक्शन ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसमें ये देखना चाह रहे हैं कि आपकी स्किल लेवल आपके बिहेवियर में कितनी है। तो वो क्या करते हैं, उस स्किल के हिसाब से इंडिकेटर जो है फाइंड आउट करते हैं और इसकी एक लिस्ट बना लेते हैं। देन दे अरेंज दिस इंडिकेटर इन अ ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस। फिर वो क्या करते हैं, इन इंडिकेटर को अरेंज करते हैं उस ऑर्डर में जिस तरह उन्होंने अपीयर होना होता है। एंड देन दे मेक ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्टूडेंट्स, और जब स्टूडेंट्स उसके परफॉर्म कर रहे होते हैं स्किल्स को, तो वो स्टूडेंट की ऑब्जर्वेशन लेते हैं और वो चेक लिस्ट को अपने सामने रखते हैं। स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप जो जो चीज़ परफॉर्म करता जाता है वो उसके आगे टिक लगाते हैं, जो जो स्टेप मिस करता जाता है वो उसे क्रॉस कर देते हैं या खाली छोड़ देते हैं। दैट्स हाउ this is one way to measure psychomotor skills of students. The second way of measuring or testing psychomotor skill is through rating scale. So what is a rating scale? A rating scale is a scale on which teacher give a rate to the student's performance. I'm sure that you have gone through some of the rating scale. They are much similar, look like the questionnaires and opinionaires. So आपने जब क्वेश्चनेयर और ओपिनियनेयर देखे होंगे तो वह आपने देखा होगा कि उसके कॉलम में स्टेटमेंट्स होती हैं या सवालात होते हैं और दूसरी तरफ स्केल बने होते हैं और उनमें इस किस्म की स्टेटमेंट होगी: स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। और आप जब टीचर एवेलुएशन करते होंगे तो मे भी आप इसी किस्म के रेटिंग स्केल्स के ऊपर करते होंगे। लेकिन यहाँ पे टीचर्स ने स्टूडेंट की स्किल्स मैयर करनी है, तो उनके रेटिंग स्केल्स पे इस किस्म की ऑप्शंस या इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं। वेरी प्रिसाइज, यानी उसने ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म किया। एप्रोप्रिएट, ठीक किया। अ बिट एप्रोप्रिएट, थोड़ा बहुत ठीक किया। नॉट राइट, बिल्कुल गलत परफॉर्म किया। नॉट एप्रोप्रिएट, वो परफॉर्म ही नहीं कर सका। Here is an example. How to get the thermometer out of its place. अब स्टूडेंट थर्मामीटर को निकाल रहा है और थर्मामीटर के साथ वो कोई स्किल करके परफॉर्म कर रहा है और टीचर के पास ये रेटिंग स्केल मौजूद है। सबसे पहला काम स्टूडेंट ने क्या करना है कि थर्मामीटर जहाँ पर रखा हुआ है वहाँ से उस थर्मामीटर को बाहर निकालना है। अगर उसने प्रिसाइजली बाहर निकाल लिया तो टीचर क्या करेगा, 5 को इंसर्कल कर देगा। अगर उसने अप्रोप्रिएट नहीं निकाल लिया तो 4 को करेगा। अगर उसने कुछ डिफ़िकल्टी से निकाला पर निकाल लिया तो 3 को करेगा। और अगर उसने बड़े ही गलत तरीके से थर्मामीटर को निकाला तो इसका मतलब है टीचर 2 को इंसर्कल करेगा। और अगर वो थर्मामीटर को बाहर निकाल ही नहीं सका सक्सेसफुल और कहीं बीच में ही तोड़ दिया तो टीचर किसको इंसर्कल करेगा, 1 को। Then position by lowering the mercury as low. How to install a thermometer in the body of the measured temperature. Long time installation thermometer on the measured temperature. और ये तमाम चीज़ें क्या हैं, ये तमाम की तमाम इंडिकेटर्स हैं। और ये इंडिकेटर्स क्या करें, दे आर measuring the skills of the student to use thermometer. और टीचर क्या कर रहे हैं इसमें, उसकी एक एक जो स्किल है जो एक ऑर्डर में अपीयर हो रही है उसके ऊपर उसकी रेटिंग करेंगे और फिर इस रेटिंग की क्या होगी, स्कोरिंग हो जाएगी। तो these are the 2 ways in fact teachers can use to give these are the 2 ways that teachers generally use to examine student skills and give them marks over there. So these are the 2 means and ways of measuring psychomotor skills in a student. Teachers use checklist, teachers use rating scales to measure student skills and actually give them marks and scores. For today, we have discussion till over here. I hope that you enjoy the discussion, and if you have any question, please don't forget to ask it to your co-teacher for the next time. Thank you so much.